Good morning. We will start chapter 5th history and talked about pastoralists in the modern world. In previous lecture, we have discussed the movement of pastoralist. Now moving on further after his judicious calculation of the time movement and estimation of the pastoralist availability everything. What about the colonial impact on the pastoral nomads? Did the British rule impact the pastoral nomads? Yes or no? We find out. As you know, the process of colonization started in the 16th century and the European countries to capture more and more colonies outside of Europe. The spread of colonialism and had a deep impact on the pastoralism. Till now, we have discussed what is the pastoral life, how it move on and how they spend their life. Now moving on into the understanding of what happened their life after the entry to the Britishers into India or the colonial rule impact the Britishers' life. Whereas, see here, this has a dramatic influence on them. The life changed dramatically. Till the time they were happy, wandering one place to another place. They know when they have to move, when they have to adjust. But after the Britishers entered into the life of pastorals, the life has changed and become horrible and worried for them. Why? Because the ground started to shrink, the movement of the pastorals are being restricted and amount the revenue what they have to pay was far much less, but now they are forced to pay huge amounts. The similar way the Britishers believed that the transformation of the grazing land into cultivated land is very much important for them because these grazing lands according to the Britishers are wastelands. They could not collect any revenue for them. So they felt is the wasteland, if you cultivated these wastelands seems to be cultivated land and produce cotton, jute, wheat apart from just getting revenue. They are also compensating the requirement in England where they need cotton crops, they can be compensated what were we getting in this cultivatable land. So this was the dream for the Britishers. So Britishers selected the individuals, gave for them certain concession, encouragement and sometime announced they only as the village headmen. Here these wastelands are actually the homelands or the pasture land for the pastoralist. This is the first major threat because of the colonial rule. Now moving on to the second important facts. The Forest Act. As we all know, because of the Forest Act which came in 1878, they divided forest into three major categories. First, protected forest, second, reserve forest and the other village forest. So, in the reserve forest where the Devdar and Sal as the timber produced, there is a entry of the pasture nomads completely restricted. They are not supposed to enter here and strict restrictions for them. Forest Acts by the mid 19th century, various forest acts were enacted. These acts had a very adverse impact on the pastoralists. Through these acts, some forests which produced commercially valuable timber like Devdar or Sal were declared reserved. There is the entry of the pastoral or nomads completely restricted. They are not supposed to enter here and strict restrictions for them. On other forests were classified as protected forest. In these forests, some customary grazing rights. Customary grazing rights means that the people are used to by custom and tradition under these rights. Customary grazing rights means होता है कि सिर्फ अपने कस्टम और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उनको राइट्स मिलते हैं. तो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड. कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनको जो है थोड़ा सा
वहाँ पे राइट मिला हुआ था कि वो उन फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा सकते हैं. This under strict supervision, they have to allow this reason because according to them, the British officials grazing is sapling will get destroyed because of grazing, and young plant which are shooting up will be completely tempered by the movement of the cattle. So they don't want this to happen. So strictly restricted grazing at any cost. And they also gave no entry in reserve forest and limited entry in the protected forest, but also regulated strictly, and permit is only in time bound reasons, like from this time to that time. They also mention to entry time and the departure time. So all these life of pastoral making tough and tougher, very difficult times where they are passing through. The permit specified the period in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fine. The other important factor is they have to make certain acts which label is that criminal act. Criminal acts, what are those? Criminal act, first enacted of the Criminal Tribal Act. So which type of act is this? Now the colonial government wanted to rule over a settled population. It was easy to collect taxes from settled people. आपने क्लास 8 में भी इसको पढ़ा है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि एक सेटल्ड पॉपुलेशन से बहुत आसान होता है टैक्स कलेक्ट करना, और बहुत आसान होता है कि उनके ऊपर टैक्स लगाना, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता रहता है तो टैक्स लेना बहुत मुश्किल काम होता है. तो वो सबसे पहले चाहते थे कि जो पेस्टरल कम्युनिटी है वो सेटल हो जाए. इसकी वजह से इन लोगों ने इस तरीके के एक्ट्स जो है वो लगाए थे. तो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट भी उसी का एक हिस्सा माना जाता है. सेकेंडली, सेटल्ड पीपल वर सीम एज पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग, और ये भी माना जाता है कि जब कोई सेटल्ड पीपल होते हैं तो वो पीसफुली और लॉ को फॉलो करने वाले होते हैं. तो अनसेटल्ड होते हैं जिनका कोई प्लेस नहीं होता, उनको ये माना जाता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकते या उसको स्ट्रिक्टली नहीं मानते. In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribal Act. By this act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes. They were stated to be criminal by nature and birth. Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. This restricted their grazing grounds, their agricultural stock declined, and their trade and crafts were adversely affected. The British are suspicious and they never trusted people of mobile craftsmen or these nomadic pastorals. Why? Because Britishers want to have settled population. It is very easy to control them and to identify them when they are settled in a specific region. But as we know, the condition of the nomads do not allow to stay particular region because the climatic changes, they need to move one place to another place. Next, our next topic is taxation. The Britishers did not leave anything for which they can generate revenue. आप लोगों ने 8th में पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि ब्रिटिशर्स हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो रेवेन्यू ना कलेक्ट करना चाहते हैं. उनको पैसा चाहिए था, उनको जो है मनी के फॉर्म में रेवेन्यू चाहिए था. तो वो हर चीज़ से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, पैसा कलेक्ट करना चाहते थे. टैक्सेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम्स. They have lay taxation on land, on water, on salt and on trade and even on animals also. So till mid 19th century we never heard in our country is grazing tax. किसी ने नहीं सुना था कि ग्रेजिंग के ऊपर भी टैक्स लगता है या जहाँ एनिमल्स का जो चारागाह होता है, जहाँ पे एनिमल्स को चरने के लिए छोड़ा जाता है, खाने के लिए छोड़ा जाता है, उसके ऊपर भी कभी टैक्स नहीं लगता था. ऐसा कभी भी सुना नहीं गया. लेकिन 19th सेंचुरी के बाद से हमारी कंट्री में ग्रेजिंग टैक्स भी जो है ये भी इसकी भी बात होने लगी थी. तो
the grazing, when animal come and graze, they have to pay taxes. So per head they have to collect and pay the taxes to the Britishers. It was 1850s to 1880s. It was let out to the contractors, and it was auction, and contractors used take it to very heavy charges. They can collect as much as amount they want to compensate that one by by the 1880s. The government began to collect taxes directly from the pastoralist. Each of them was given a pass. To enter a grazing tract, a cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and amount of tax he paid was entered on the pass. ये पास पे लिख दिया जाता था कि किस टाइम से किस टाइम तक वो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए हैं, कितना टाइम उन्होंने लिया है, और उनके पास कितने कैटल्स हैं, और उनको ग्रेजिंग टैक्स कितना देना है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस पास के ऊपर मेंशन कर दिया जाता था. So what was the impact of the Britishers' colonial rule on the life of pastoralist people? How did the life of the pastoralists change? Now students, how did the change affect the life of the pastoralist? अब हमें देखना है कि ये इतने सारे रूल्स, रेगुलेशन, टैक्सेशंस, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट्स, ये इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ पेस्टरल्स की लाइफ पर. सबसे पहले हम देखेंगे देयर वाज नो पास्चर अवेलेबल फॉर कैटल सफिशिएंटली. इनके पास अब कोई पैस्चर लैंड, जो कोई अपने एनिमल्स के लिए, उनको चराने के लिए कोई जगह नहीं बची. तो जैसे जैसे कल्टीवेशन लैंड जो है वो बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे पैस्चर लैंड जो है वो छोटा होते चले जा रहा था. So now the movement was the pastoral was the limited. They are not supposed to move. They restricted the entry for the people from the which has been nominated for them. जहाँ पे उनको नॉमिनेट कर दिया गया था, जहाँ पे उनको बना दिया गया था, वहाँ पर उनकी उसके अलावा दूसरी जगह उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया था. अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी? कैटल डाइड ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ फॉडर. धीरे धीरे इनके कैटल्स जो है वो फॉडर की कमी होने लगी और उसकी वजह से वो मरने लगे. नेचुरल रिस्टोरेशन द पेस्ट्रल ग्रोथ स्टॉप्ड. जो इनका एक प्रोसीजर था कि एक लैंड से दूसरी लैंड ये शिफ्ट होते थे, वो प्रोसीजर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई. ड्यू टू इंटेंसिव ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से जो पैस्चर लैंड होता था उसको वापस इम्प्रूव होने का टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब होती चली गई और पैस्चर लैंड्स जो है वो बैरन लैंड्स में चेंज होने स्टार्ट हो गए. नाउ पेस्ट्रल कोपिंग विद अब दिस चेंजेस. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ पेस्ट्रल ये कैसे इनके लिए एक अभिशाप बन गया, कैसे पेस्ट्रल्स के लिए क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई. नाउ मूविंग ऑन, देयर वाज नो फ्री, नाउ वी हैव टू पे एवरीथिंग. देयर वाज अ पास mentioned earlier for grazing, also they have to pay taxes. Now grazing on limited lands. तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही थी. अब इस पे इनका रिएक्शन क्या था? पैस्टरलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वेराइटी ऑफ वेज. इसका जो इम्पैक्ट था वो था सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स. धीरे धीरे इनके जो कैटल्स थे वो कम होने शुरू हो गए. मैनी ऑफ द पेस्टरल कम्युनिटीज़ डिस्कवर न्यू पैस्चर एज दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशन पैस्चर ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1947. कुछ कम्युनिटीज़ जो थीं वो सिंध की तरफ मूव कर गईं, कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो इंदस की तरफ मूव कर गईं, कुछ कम्युनिटीज़ हरियाणा की तरफ जो है वो मूव कर गईं. इन्होंने अपने जो उनके जो रीजन्स थे उन रीजन्स को छोड़ करके ये लोग नए रीजन्स में चले गए, दूसरे रीजन्स में चले गए. ओवर द ईयर्स सम रिच पैस्टरलिस्ट बिगन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन. जो कुछ रिच पैस्टरलिस्ट थे उन लोगों ने ज़मीनें खरीदी और वो लोग वहाँ सेटल होकर के उन्होंने एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर दिया. मैनी पुअर पैस्टरलिस्ट हैव बिकम लेबर, डेली वर्कर वर्किंग एंड हैव स्टार्टेड वर्किंग इन फील्ड और इन स्मॉल टाउन्स. जो पुअर थे, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उन लोगों ने एज अ लेबर काम करना शुरू कर दिया, डेली वेजेस पे काम करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे शहरों की तरफ मूव कर गए. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई, मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली इन टाउन एंड स्टार्टेड सेलिंग मिल्क प्रोडक्ट्स. बहुत सारे जो है वो सेटल परमानेंटली कहीं ना कहीं सेटल हो गए और इन्होंने अपना दूसरा कोई काम स्टार्ट कर लिया. और इनकी जो अपनी लाइफ थी उस लाइफ से ये लोग हट गए पूरी तरह से. इनका जो मूवमेंट था वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो गया. हमने देखा कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमना, वहाँ के साथ एडजस्टमेंट, क्लाइमेटिक एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये
पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड न्यू लॉज, सेटलमेंट्स, पैटर्न फोर्स पेस्टल कम्युनिटीज़ टू अल्टर देयर लाइफ्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है हाउ डिड पेस्टल कम्युनिटीज़ एल्स पेस्टरलिज्म इन अफ्रीका। हमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्टरलिज्म इन अफ्रीका। सो students, hope you understand. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.